Good morning, students. Today we are going to continue chapter 3, that is life of animals. So, in previous class we have learnt about reproduction. What is reproduction? Reproduction is a process by which all living beings produce their own kind. Okay? That means they give birth to babies of their own kind which look similar to them. Secondly, we have also studied that the parent and the baby do not look exactly like each other. Although many features are same, but they are not exact copies. So in today's lecture we are going to learn about two ways of reproduction in animals. Animals may reproduce in two ways, by laying eggs and by giving birth to young ones. So animals, how can they reproduce? They reproduce by two ways. That is, first they by laying eggs, like hen. Okay, they lay eggs, and from eggs, when egg hatches, then chicks come out of an egg. So by laying eggs and by giving birth to young ones. Like a dog give birth to a puppy and a tiger give birth to a cub. So there are two ways of reproduction in animals. तो कल के लेक्चर में क्लास में हमने ये पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जितने भी लिविंग बीइंग्स का मतलब जो ग्रो करते हैं, जो सांस ले सकते हैं, ओके, वो जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, तो ये सब लिविंग बीइंग्स वो अपने काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि जो हमारा ये टाइगर है, इसका बेबी है कब, तो ये दोनों सेम है, तो ये अपने काइंड को प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे. ओके, हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो बेबीज़ होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखते, ऑल्दो उनके बहुत सारे फीचर्स सेम होते हैं. जैसे इन दोनों के बहुत सारे फीचर्स सेम है, बट दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ ईच अदर. जैसे आप लोग और आपके पेरेंट्स जो है, आप दोनों के पास जो है क्या है, दो आँख है, नाक है एक, और आपके बाल ब्लैक कलर के हैं, और या फिर जो भी कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी आ सकता है, बट सबके पास दो आँख, नाक, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं. तो ये सारे फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट फिर भी आपका फेस जो है आपके मदर या आपके फादर से एग्जैक्टली कॉपी नहीं करेगा. ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स किन दो तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट है बाय लेइंग एग्स, यानी कि जो एग अंडे डालकर, जैसे कि यहाँ पे एक हैन है, वो अंडे डालती है और अंडों में से बाद में चूज़े निकलते हैं. सेकंड है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि आपका ये है टाइगर है, ये बर्थ देता है, ठीक है, बच्चों को पैदा करता है. डॉग है, डॉग और पप्पी ऐसे. ठीक है, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 173. नाउ फर्स्ट लेट मी रीड दिस. रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स. Birds, fishes, insects, snakes, frogs, snail, turtles and lizards lay eggs. The young ones hatch from the eggs. So these are the animals which reproduce by laying eggs. Like bird, fishes, insects, snakes, these all animals lay egg, and from the egg the baby comes out after a particular period of time. ओके, तो यहाँ पे वो एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे पक्षी है, मछली है, इंसेक्ट है, सांप है, फ्रॉग है, स्नेल है, टर्टल यानी कि कछुआ है, लिजर्ड छिपकली है. ये सब जो है अंडों से अंडे डालते हैं और अंडों से जो है यंग वंस मीन्स बेबी जो है बाहर आता है.
Okay. So now, structure of an egg. Birds lay eggs in their nests. The eggs of all birds have a similar internal structure. An egg is covered by a protective covering called eggshell. So you can see here, this is the structure of an egg. Okay. So all birds, where they lay eggs, they lay eggs in their nest. Okay. What is a nest? Nest is the home of a bird. Okay. So there they lay eggs, and all the eggs of all birds, any bird you can take, okay, their egg have similar internal structure, means the internal structure of egg of any bird is almost similar. They may have, their color may change, the outer shell, the color of the outer shell may have difference, but the internal structure is same. For example, the color of a hen, the color of egg of a hen is white, but the color of egg of a duck is not white, it is light orange type. Okay. So this means there is a similarity in internal structure. It may be possible that their color is different, but the internal structure of all eggs of all the birds are similar. An egg is covered by a protective covering called eggshell. So here you can see the outer shell. It is the outer covering of a egg. Okay. So that means, what is an eggshell? Eggshell is an outer covering that protects the egg. So it is a protective covering, and this protective covering is called eggshell. What does it do? It protects the embryo which is inside. So what is the function of an eggshell? It protects. Okay, that means it safeguards the embryo which is inside. So here the word embryo is written here, EMBRYO. What does this mean? This means an animal or a baby in the early stage of development before birth. So before birth, in the early stage of development, the early stage of development of an animal or a baby is called embryo, and it is before birth. So the function of eggshell is to protect this embryo. Okay. Next comes the albumin. So the egg is filled with a jelly-like substance called albumin. It is rich in protein. It protects the growing embryo. So there is a jelly-like substance. Jelly-like substance. For example, you might have seen aloe vera gel. So it is a jelly-like substance. So albumin is also similar to that. So albumin is also a jelly-like substance which is filled, with which egg is filled. Okay. So it is protein rich. It is rich in protein, means it is protein rich. And it protects the growing embryo. And it also protects the, what is the function? Its function is also to safeguard or protect the growing embryo which is inside. Third comes yolk. Yolk is the yellow part of the egg. It is rich in vitamins, fat and minerals. It provides nourishment to the baby growing inside the egg. So this yellow part you can see, it is yolk. Okay. It is rich in, that means it is rich in vitamins, fats and minerals. So this yolk is vitamin rich, and it has a huge, rich means it has huge quantity of vitamins, fats and minerals. And what does it do? It provides nourishment. Nourishment means it helps the baby to grow by providing all the vitamins, fats and minerals. So it nourishes the baby and helps the baby to grow inside the egg.
Okay, so from here you can see the outer shell, albumin, yolk, and it is the structure of an egg. So स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हर एक जो पक्षी होता है वो अंडे घोंसलों में देता है। जितने भी पक्षी है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी जो हिस्सा होता है उन सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट का। हालांकि कलर चेंज हो सकता है अंडों का, पर उनका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। जैसे अंडा होता है, मुर्गी का अंडा वाइट होता है, पर बतख का जो है थोड़ा रेडिश होता है। ठीक है, रेडिश का मतलब ऑरेंज रेड टाइप में होता है। ठीक है, तो अंदर का आउटर शेल का कलर चेंज है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर फिर भी उन दोनों का भी सेम रहता है। तो एग जो है उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एग शेल के बारे में। एग शेल क्या होता है? एग शेल आपने अंडा देखा होगा मोस्टली सभी बच्चों ने, तो जो उसकी बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हार्ड होता है, उसको वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको एग शेल कहते हैं। उसका काम क्या है? वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है जो इनसाइड है। एम्ब्रियो का मतलब कोई भी बेबी या कोई भी एनिमल जो कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो, जन्म से पहले जो उसका डेवलपमेंट होता है किसी बेबी का या फिर एक एनिमल का, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो वो एम्ब्रियो अंडे के अंदर होता है और एग शेल उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड आता है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन एक जेली लाइक सब्सटेंस है। अब जेली लाइक सब्सटेंस जैसे एलोवेरा जेल होता है, तो एलोवेरा जेल कैसा होता है? जेल टाइप का होता है ना, वो उसी टाइप में एग के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको एल्बुमिन कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। रिच का मतलब बहुत मात्रा में आपका उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये भी प्रोटेक्ट क्या करता है? ग्रोइंग जो एम्ब्रियो, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है एल्बुमिन। उसके बाद आता है ये येलो पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? यॉक। ये येलो कलर का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन, फैट्स और मिनरल्स होते हैं। और इसका क्या काम है? ये बेबी को जो अंदर है उसको नरिश करता है, तो नरिशमेंट के काम आता है। नरिशमेंट यानी कि उसको बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये आपका था स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। Birds build a nest when they want to lay eggs. After the nest is built, the female bird lays eggs in it. Not only this, it keeps the eggs warm by sitting on them. This is called incubation. So, it is written that whenever birds want to lay eggs, they build a nest. What is a nest? It is the home of a bird. Okay, so and after building the nest, after that building the nest, the female bird lay eggs in it. So whenever a bird want to lay egg, it build a nest, and only after building a nest, the female bird lays egg. So only a female bird is going to lay egg. Okay, now once the egg is laid by the bird, what does it do? It warms the egg. How does it warm? It warms the egg by sitting on the egg, and this process of warming the egg by sitting on it is called incubation. Okay, तो incubation और बर्ड्स में जो है जब भी उनको अंडे डालना होता है तो वो अपना एक घोंसला बनाते हैं। घोंसला, चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। उस घोंसले को बनाने के बाद ही एक फीमेल बर्ड यानी कि लड़की बर्ड, ठीक है, फीमेल बर्ड जो है वो अंडे डालेगी। अंडे डालने के बाद पहले वो घर बनाती है, फिर अंडे डालती है, फिर क्या करती है? फिर उसको वार्म करती है। वार्म का मतलब थोड़ा गर्म करती है, हल्का सा। कैसे करती है? उसके ऊपर बैठ के, ठीक है, और तो वो अपनी गर्मी देती है उन अंडों को वार्म करती है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें जो है चिड़िया अंडों के ऊपर बैठ के उसको वार्म कर रही है, उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। When the chicks come out of the eggs by breaking the shell, it is called hatching. Baby chicks come
out of a hen's egg 21 days after the hen lays them. So it says that the chick, this is a chick, okay, baby of a hen is called chick. So when chick comes out of an egg, you can see from the picture that a chick is coming out of an egg. So when chick comes out of an egg, how it comes out? By breaking the shell. So it breaks the shell and the chick comes out of the egg. So this process is called hatching. So what is hatching? Hatching is a process by which chicks comes out of the egg by breaking the shell. So you can see from the picture that a chicken is coming out of the shell egg by breaking the shell. Okay, this process is called hatching. Baby chicks come out of a hen's egg 21 days after the hen lays them. So baby chick, in how many days it comes out? It comes out in 21 days. Okay, after, you can count the days. Let's suppose that a chicken lays the egg on date 1st. So the chick will come out on date 21. That means it takes 21 days to come out. So this is today we are going to do till this paragraph only. So you have to read this chapter up to this at least 2 times, and for your reference I have written a few words, so it will be helpful for you while reading the chapter. When the chicks come out of the eggs by breaking the shell, it is called hatching. Baby chicks come out of a hen's egg 21 days